Hi everyone, this side Ayushi Singh. As I told you in my previous video that I'm pursuing PhD and completed my BCom MCom. Today I'm going to tell you about why is commerce important. पहले वीडियो में हमने बात की थी what is commerce. इस वीडियो में हम बात करेंगे why is commerce important, commerce क्यों important है या फिर functions of commerce. Actually, these two questions contain the same answer. If any of these question arises in your exam, you have to write the same answer. So why is commerce important? Commerce क्यों important है? These are the points which will explain why is commerce important. कॉमर्स एम टू फुलफिल द पीपल्स इंक्रीजिंग डिमांड. हम ह्यूमन की डिमांड काउंटलेस होती है. आज हमें लैपटॉप चाहिए तो कल हमें कार चाहिए, फिर हमें हाउस चाहिए, फिर हमें सेविंग्स चाहिए, फिर हमें प्रॉपर्टी चाहिए. सो इन दिस वे हमारी डिमांड्स काउंटलेस होती हैं. अब जब हमारी डिमांड्स काउंटलेस होती हैं तो दीज डिमांड्स कैन ओनली बी फुलफिल्ड बाय purchasing these things. For example, if you want to make a purchase of any product जो मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया तो तुम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से नहीं ले सकते. यू हैव टू गो टू दी अवेलेबल मार्केट जहां पर वो मैन्युफैक्चरर ने तुम्हें ऑलरेडी डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं किया है, already given to the seller and the seller is selling to you. So manufacturer goes to the seller and seller goes to the ultimate buyer to provide that product. In this way product खरीदा इंसान ने, उसका पेमेंट किया और वो घर आ गया. In this way aims to fulfill the people's increasing demand. Commerce. Are you getting my point? Human desire are limitless. They fall into two categories, primary and secondary. Desires, wants, needs, ये प्राइमरी में डिवाइड होती हैं और सेकेंडरी में. प्राइमरी आर दोज जो बहुत नेसेसरी हैं एंड सेकेंडरी आर दोज जो बिल्कुल भी नीडेड नहीं है. अभी उनके बिना हमारा काम चल सकता है. हम आज नहीं तो कल उन्हें ले लेंगे. Distribution and the transfer of the goods across international border are now feasible and thanks to commerce. Commerce ने इतना अच्छा अवेलेबिलिटी कर दी है प्रोडक्ट की हमारे लिए कि आज हम अब्रॉड का प्रोडक्ट, फॉरेन कंट्री का प्रोडक्ट हमारे इंडियन मार्केट में खरीद सकते हैं. नाउ वी आर एबल टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्री. These days we can purchase anything made anywhere in the globe. For example, this is the globe. These products are sold in different countries, means made available in different countries from the different countries. कोई दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट आया और किसी दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया गया. कस्टमर ने परचेस किया, कस्टमर को आज यूएस का प्रोडक्ट इंडिया में बैठे हुए मिल रहा है एंड थैंक्स टू कॉमर्स. This has therefore made it possible for man to fulfill his countless desire and advance social welfare. In this way, commerce ने बहुत हेल्प कर दी है desires को, नीड्स को, वॉन्ट्स को फुलफिल करने में. कॉमर्स कंट्रीब्यूट टू आवर राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज व्हाट? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ अ पर्टिकुलर पर्सन वांट्स टू लिव. कि वो पर्सन कह रहा है कि मुझे ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है. दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड्स व्हाट? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूड करता है मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, नेसेसिटीज, कंफर्ट, लग्जरीज. मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द पीपल इज कितना खुश है इंसान अपने जीवन में. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज द कैपिटल, द सेविंग, द हाउस, car, all these things comes under economic prosperity. The quality of life that citizen of the society enjoys refers to as a standard of living. ये मैंने आपको बता दिया. An increase in the product consumption rises the man's standard of living. The more and more person कंज्यूम्स द प्रोडक्ट कि आज मुझे सोफा भी चाहिए, आज मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए, आज मुझे एसी चाहिए अपने घर में, आज मुझे लैपटॉप भी चाहिए, पेन भी चाहिए, डिजिटल पेन विद
टच स्क्रीन लैपटॉप भी चाहिए, मुझे फोन भी चाहिए. All these things are increasing the standard of living of a particular person. He need to be able to obtain item before he can consume them. Obviously जब उसे वो सामान को खरीद कर लेकर आएगा तभी तो वो consume करेगा. Trade rises our standard of living by enabling us to obtain what we want, when, where, and the proper price. ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये हेल्प करता है हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने में बाय प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट, अवेलेबल मार्केट एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस एंड राइट condition with proper price. So trade is helpful in this way. So guys, commerce is a very interesting subject. आप इसको अगर फोकस करके पढ़ेंगे ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब्जेक्ट. कॉमर्स क्रिएट्स जॉब. जब किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही हैं, बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं, कोई सा भी वर्क एस्टैब्लिश हो रहा है, तो उस वर्क के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए, उस कंपनी के लिए, उस बिजनेस के लिए यू नीड स्किल्ड पीपल, यू नीड अनस्किल्ड पीपल. जब वो लोग तुम्हारे यहाँ वर्क करने आएंगे, ऑटोमेटिकली कॉमर्स क्रिएट्स job. In this way, commerce creates job. Growth in the banking, transportation, warehousing, advertising, and other trade-related agencies is the outcome of expansion of the industries, trade, and commerce. एक्सपेंशन होगा हमारी इंडस्ट्री में, ट्रेड में एक्सपेंशन होगा जब हमारी ग्रोथ होगी बैंकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में ग्रोथ होगी, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट होंगे ऑफ द प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू टेल द पीपल कि ये मार्केट में प्रोडक्ट आ गया है, अब यू कैन परचेज दीज प्रोडक्ट्स इन योर मार्केट. तो इन दिस वे कॉमर्स क्रिएट्स जॉब. These organizations require staff to maintain their operation, and increase in the production rises demand, which in terms create more job opportunities. In this way, when the industry is expanding, more and more workers are needed. If more and more workers, whether they are skilled or unskilled, if they are needed, then workers automatically getting the job. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कंप्लीट हो रही हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है. Therefore, as commerce grow, a nation's workforce has the opportunity to choose an increasing number of the options. If we talk about type of the industries, the type of the industries are oil and gas, industrial, consumer goods, healthcare, consumer services, telecom, utilities, financial services, technologies, material. If we talk about types of jobs, trade, professional, unskilled. Trades, plumber, electrician, carpenter. Professions होते हैं डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट, डेंटिस्ट. अनस्किल्ड कौन सी हुई? फार्मर या लेबर्स कह सकते हो तुम उन्हें. असेंबली लाइन वर्कर, ग्रॉसरी क्लर्क्स, guards, these kind of the people. Are you getting my points? So these industries are very much helpful in creating jobs. In this way, jobs मिल जाती हैं unemployed people को. Commerce connects manufacturer to the consumer. जब मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, वो प्रोडक्ट एकदम से डायरेक्टली बायर को सेल नहीं किया जाता है. There are different kind of the mediators जो कनेक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से. मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट होलसेलर को दिया, होलसेलर ने प्रोडक्ट रिटेलर को दिया, रिटेलर ने प्रोडक्ट अल्टीमेट बायर या कंज्यूमर को दिया. So these wholesaler and retailer are what? These are the mediators. Wholesaler is the person who is purchasing product from manufacturer and then selling it to the retailer, and then retailer selling it to the end buyer. Retailer is the person who is purchasing a small quantity of the product from the wholesaler and then directly selling it to the ultimate buyer. Wholesaler bulk में product purchase करता है. Are you getting my point?
सो द गोल ऑफ द प्रोडक्शन इज फाइनल कंजम्पशन. जब हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, उसे मार्केट में देते हैं, मार्केट से प्रोडक्ट हम लेकर आए, तो अल्टीमेटली वी आर कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट. Producer and the customer can be connected through commerce by means of retailer, wholesaler and the trade services. ये मैंने आपको बता दिया है. Advertisement and sales techniques provide consumer with information about various things. Advertisement helpful होता है जब किसी भी लैपटॉप या किसी भी तरीके का फोन आया, तुम्हें नहीं पता लग रहा है, किसी ने भी मैन्युफैक्चर किया. दैट फर्स्ट यू कम टू नो थ्रू एडवर्टीजमेंट. या फिर सेल्स टेक्निक यूज की जाती है, पर्सनल सेलिंग हो गई कि जगह जगह उस प्रोडक्ट को दिखाया, उसका डेमो कराया. फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप आया नया, तो उसका एडवर्टीजमेंट हुआ, उसमें क्या क्वालिटी है, क्या फीचर है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या विंडो चेंजेस हुए हैं, किस तरीके का वो लैपटॉप आया है. दैट इज डन थ्रू एडवर्टीजमेंट. और पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि उस लैपटॉप को जगह जगह पर्सनली दिखाया कि ये फीचर है, ये चीज है, ये क्वालिटी है. एंड दिस वे कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. थ्रू मार्केटिंग रिसर्च, प्रोड्यूसर आर केप्ट continually updated about the प्रोड्यूसर को कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, कि कंज्यूमर एक्चुअली किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है. अगर प्रोड्यूसर को वाकई में ये चीज को दिमाग में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाना है, तो प्रोड्यूसर को हमेशा मार्केट रिसर्च करते रहना होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Trade links and establishes communication between the center of the production and the consumption. Buying and selling, exchange of goods and services helps in making the connection between the production, which is what manufacturing, and consumption, which is what consume. So if we talk about direct distribution channel, is producer directly goes to the consumer and consumer make a purchase of the product. सॉरी. इनडायरेक्ट चैनल कौन सा है? प्रोड्यूसर ने रिटेलर को प्रोडक्ट दिया, देन टू द कंज्यूमर. अगेन अनदर वन, प्रोड्यूसर ने होलसेलर को प्रोडक्ट दिया, होलसेलर ने रिटेलर को प्रोडक्ट दिया, एंड टू द एंड कस्टमर. इन दिस वे डिस्ट्रीब्यूशन takes place or connection is maintained between the manufacturer and the consumer. Consumer improves the commerce, improves the prosperity and income of the country. जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ अच्छे खासे अमाउंट में, that product is sold to the seller sell it to the end customer in that particular market. तो प्रोडक्ट जब कस्टमर ने खरीदा, उसका पेमेंट किया, तो वो जो मनी फ्लो हुआ इन मार्केट, दैट इंप्रूव्स द इनकम ऑफ द कंट्री. सो इन दिस वे इफ वी टॉक अबाउट इनकम इन द कंट्री राइजेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोडक्शन. जितना जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना उतना प्रोडक्ट सेल होगा मार्केट में और मनी फ्लो होगा. ऑलमोस्ट 80% of the developed nations overall income comes from the manufacturing and the commerce sector combined. Commerce include what? Exchange of goods and services. मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है और उसको सेलर को देकर सेलर उसे सेल कर रहा है. बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस टेकिंग प्लेस. इन दिस वे मैन्युफैक्चरर एंड कॉमर्स, बोथ ऑफ देम कंबाइन टुगेदर to improve the prosperity and the income of the country. Earning foreign exchange through export and duties on import is also beneficial. Export and import दोनों ही बहुत हेल्पफुल रहते हैं हमारी कंट्री के लिए, टू इम्प्रूव द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी एंड द इनकम ऑफ द कंट्री. कैसे? जब कोई भी प्रोडक्ट हमारा इंडिया से फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट हुआ या फॉरेन कंट्री में सेल हुआ, हमें फॉरेन कंट्री की करेंसी मिल गई. इससे हमारी कंट्री में बेनिफिट हुआ, क्योंकि फॉरेन कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री में आ गई तो हमें बेनिफिट हो गया. और हमने प्रोडक्ट को जब दूसरी कंट्री में सेल किया तो हमने अच्छे अमाउंट पे भी सेल किया. इन दिस वे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट
हेल्पफुल होते हैं. एक्सपोर्ट इज व्हाट? यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट इन अनदर कंट्री. Import is what? You are taking the another country's product inside your country. Are you getting my point? So if we talk about the economic growth क्या है? Human capital. Human capital means farmers, laborers, skilled people, unskilled people all together, plus फाइनेंशियल कैपिटल पैसा है हम पे, अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी भी कर रहे हैं हम, विच ऑटोमेटिकली हेल्प्ड इन इकोनॉमिक ग्रोथ. जब हम पे ह्यूमन कैपिटल भी है, हम पे पैसा भी है, हम बल्क में प्रॉपर प्रोडक्शन भी हो रहा है, हम प्रॉपर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट कर रहे हैं और मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कस्टमर उसको परचेज करने आ रहा है, उसे लेकर उसका मनी देकर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है क्योंकि मनी फ्लो हो रहा है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट what is import, what is export. Export are the goods and the services produced in the one country and purchased by citizen of another country. मैंने बता दिया है. Import is the good or the service bought into one country from the another country. Okay, so in this way commerce is very much helpful. Now another point, commerce बेनिफिट्स अंडरडेवलप्ड कंट्रीज. अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में स्किल्ड पर्सन की या स्किल्ड पीपल या टेक्नोलॉजी की बहुत नीड होती है क्योंकि दीज अंडरडेवलप्ड कंट्रीज बहुत बैकवर्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज क्योंकि इनके अंदर स्किल्ड पीपल और टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं होता है. तो डेवलप्ड कंट्रीज तो इन्हें स्किल्ड पीपल और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है. ये कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं और फार्मर लेबर्स और ये चीज प्रोवाइड करते हैं. इन दिस वे कॉमर्स बेनिफिट्स दी अंडरडेवलप्ड कंट्रीज. Developed nation can export technology, know-how, and skilled laborers to the developing nation, while developing nation can supply raw material to the developed nation. This aid in growing the idea of industrialization in the developing world. In this way, developed country ने underdeveloped country को अपने तरीके से बढ़ा दिया, developed बना दिया. Are you getting my point? कॉमर्स हेल्प्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज. जब भी कोई वॉर हुई, कोई भी अर्थक्वेक या फिर फ्लड आई, किसी भी तरीके का डिजास्टर हुआ, these disaster creates the need for food, shelter and clothing. अब जब इन सब चीजों की नीड होगी उस कंट्री के लोगों को, then commerce is helpful in providing all these things. Trade aid in getting the necessities like food, medicines, relief supplies to the affected region after disasters like flood, earthquake, and war happens. See, food, shelter, and clothing. Are you getting my point? In this way, shelter is provided by the other country to that particular country जहां पर disaster हुआ है. They are distributing food to the people जिनको वहां पर नीड है जहां पर डिजास्टर हुआ है. सो स्टूडेंट्स, आई एम डन विद दिस टॉपिक. अगर आप लोगों को मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर कुछ भी कमी दिखाई दे रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए. थैंक यू.